Hi there. Welcome to day one of 21 Days Money Manifestation Workshop. I'm Suruchi Agarwal and your guide to this transformational journey. I'm so thrilled to have you here and I'm so glad that you have chosen me to invest in your financial abundance. Today it is all about setting the agenda and intention for this 21 days so that you understand what and how we are going to do this 21 days. We'll have the clarity so that you feel empowered to attract more wealth and abundance into your life. So let's take a moment, inhale slowly and exhale slowly. Take this moment to bring your thoughts together. Inhale slowly and exhale slowly. Inhale slowly and exhale slowly. And now think about this. What does financial abundance mean to you? As you think about this, think on the ways that the financial abundance means to you. It might be clearing your debt, or owning a house or a car, or starting a new business, or investing in your uh, self development, growth, whatever it is for you. So just imagine, what does financial abundance mean to you? And as you imagine and visualize this, just affirm that I'm open to receiving abundance. I am ready to rewrite my money story today. I'm open to receiving abundance. I'm ready to rewrite my money story today. I am open to receiving abundance and I'm ready to rewrite my money story today. I'm open to receiving abundance and I'm here to rewrite my money story today. So here's how this workshop will work. Every day you will get videos or exercises or some activity that will help you to change your money mindset. You will receive these practical and very simple tools and technique which you need to do for removing your money blocks, right? So taking action is really important. You have to do this. The exercises would not be more than 20 minutes every day. 20 मिनट से ज्यादा का exercises नहीं होगा. 20 मिनट तो I think you can all spare that 20 minutes. And by the end of 21 days, you will not only feel more empowered, but you will also see tangible shifts to attract money and wealth into your life, right? So 21 days के बाद में जब आप ये actions लोगे, देन यू विल बी सीइंग कि बहुत ज्यादा शिफ्ट आपके एनर्जी फील्ड में हो रहा है सो दैट आप पैसे को और अबंडेंस को अट्रैक्ट अपने लाइफ में कर रहे हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाई माइंडसेट इज इम्पोर्टेंट. व्हाई माइंडसेट, having a right mindset to attracting wealth is really important. So, do you know that most of our financial struggles are rooted in our subconscious beliefs? मतलब कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे फाइनेंशियल स्ट्रगल्स जो है वो डीप रूटेड है. इट मे बी दैट वी हैव बीन ब्रॉट अप विथ दैट बिलीव दैट पर्टिकुलर पैटर्न इनटू आवर लाइफ, और फिर या फिर किसी ने हमें हमारे अंदर इंस्टिल किया होगा, या फिर हमारा खुद का एक मनी स्टोरी रहा होगा जिसकी वजह से हमारा वो बिलीव फॉर्म हुआ है, राइट? So whatever is it is there for you, it is just an awareness. It comes and it starts with the awareness. So आज का जो activity है आपके लिए, I want you to reflect on two questions. One, what is the money story that you remember in your life? It might be in your childhood, anytime into your life. तो आपका money का story क्या है जो आप recall कर पा रहे हो, जो earliest है आपके life में? And हाउ डिड इट मेक यू फील, मतलब वो आपको कैसा फील कराता है? तो आपकी मनी की स्टोरी हो सकती है बहुत ही खराब हो कि आपने देखा है कि पैसे के प्रॉब्लम घर में रहे हैं एंड जिसकी वजह से यू हैव टू कट डाउन ऑन योर सर्टेन थिंग्स दैट यू डिजायर, और बहुत सारी चीजों में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ा है. तो वो आपकी एक मनी स्टोरी रह सकती है. तो उससे आपका बिलीव क्या फॉर्म होता है? कुछ ना कुछ आपका बिलीव इससे फॉर्म होगा कि स्ट्रगल से ही मनी आती है, या फिर मनी का पैसा कमाना बहुत मुश्किल का काम है. इट्स हार्ड टू अर्न मनी, राइट? सो या फिर बहुत लूजली या बहुत ओपनली हम लोग बोलते हैं मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज. सो ये भी एक आपका मनी है कि एक स्टोरी है. इस ऐसा कुछ अवेयरनेस हुआ होगा जिससे आपका ये एक स्टोरी फॉर्म हुआ है. सो वॉट एवर इट इज फॉर यू, यू हैव टू राइट डाउन कि आपकी मनी की स्टोरी क्या है और वो आपको कैसा फील कराता है. हाउ, व्हाट इज योर मनी स्टोरी एंड हाउ डज इट मेक यू फील? Each day we will work on powerful techniques. So today's technique is, I am open to receiving abundance. I am open to receiving abundance. I am open to receiving abundance. Be happy when you speak, people. I am open to receiving abundance. Now write this sentence
एटलीस्ट 11 टाइम्स, 11 बार आपको ये लिखना है और जोर से रिपीट करना है ऑल थ्रू आउट द डे। जब भी आपको याद आए, जस्ट रिपीट, आई एम ओपन टू रिसीविंग abundance. So as we wrap up the day one, there are three things that we have done. So your why has to be very clear. क्यों आप यहाँ पे आए हैं? Because you're open to receiving abundance and you are here to rewrite your money story that we have started with. And then I've asked you that your task for today would be like you have to write down, you have to reflect on your easiest money story. जो भी आपके दिमाग में आता है वो आपके बचपन का ही क्यों ना स्टोरी हो, कोई भी स्टोरी है जो आपके मनी के बिलीव्स को बनाए हैं, वो स्टोरी आपको रिमेम्बर करना है और लिखना है। एंड देन you have to make an affirmation at least 11 times that you are open to receiving abundance in your life, right? And after doing this, share your thoughts into the WhatsApp group. Make this WhatsApp group very interactive. And thank you so much for joining. Do this exercise today. And tomorrow we will again come up with a new exercise, which will now remove your money blocks. So we will dive deeper into clearing the money beliefs, what beliefs you have about money. So let's uh, see and wait for tomorrow. Bye bye. Have a nice day.